A very happy morning to all the dear students of class 7. In the previous videos we have been discussing about the central tendency of our data, and as we have started with the data and its organization, and after that we have discussed about finding the central tendency of a given data, and we have discussed the arithmetic mean and then the mode and then median. Okay, so based on the type of the data we have been using the different method to find the central tendency. Now today, moving further, we are going to discuss about the bar graph, and bar graph you have learned earlier also in your 6th standard, and but today we will discuss a double bar graph also. So the today's video will be more demonstrating than the explanatory video. Okay, so it will demonstrating that how to form a bar graph and how to form a double bar graph and what is their use and its significance. So talking about the bar graph, you know that a data is represented by using a bar graph. Okay, कोई भी डाटा आपके पास given है, like considering the favorite sports of the student of your class, like you have 60 students in your class and you ask the favorite sports of each and every student from selecting the 5 sports like kabaddi, kho, badminton and other. So you get that data and then you want to represent it in the form of bar graph. So that in that way the bar graph is used, that is to represent a data so that the inferences from the data can be drawn more clearly and easily, conveniently and in a fast manner. Okay, तो बार ग्राफ से आपको क्या, बार ग्राफ से क्या इंटरप्रेट करते हैं आप जब भी आप कोई बार ग्राफ को देखते हैं और उससे इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं. सो यू कैन सी दैट द लाइक इफ आई शो यू एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली, like here you are seeing this is a bar graph. Okay, bar graph is called as bar graph because it is drawn on the graph paper grid sheets. Grid means line wali aapki sheets. Okay, the line sheets you draw on the graph and you have bars. These are this is called as bar. Okay, and this is the height of the bar and all the bar are all of uniform width. Uniform width means अगर मैं 1 सेंटीमीटर का इस बार को मैंने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है तो ये बार भी मेरी 1 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करूंगी मैं, और इनके बीच में भी जो गैप होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, इक्वल गैप एंड इक्वल विड्थ. यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इक्वल विड्थ. सो द हाइट ऑफ दीज ग्राफ्स, दीज बार्स, द हाइट ऑफ दीज बार्स are do explain easily that which is like here the favorite color and the number of students are given. So here you can see that the height of the color blue is maximum. Height of the color blue is maximum, so you can interpret at very fastly without seeing the numbers. You can interpret that the blue color is liked by the most of the students. Okay, the blue color is the favorite color of most of the students, or the maximum student likes blue color. So this is the interpretation of a bar graph. Okay, and bar graph हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को easily रिप्रेजेंट करें, ताकि उससे इन्फेरेंसेस इंटरप्रिटेशन हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही कन्वीनियंटली निकाल सकें. ठीक है, तो इसलिए हम बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ दोनों को ही एक एक एग्जांपल से, आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर ईच टू शो यू that how to draw the bar graph and also how to draw the double bar graph. After that the exercise 3.3 is very much easy. If you have understand the concept, the solving questions is much easier for you. So like here you can see that that the height of the color green is minimum, है ना. color green की height सबसे minimum है. It means the green color is liked by least number of students, है ना. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं that 19 is only student number of students who like green color. So I am taking this example only to draw this graph. Okay, to draw the bar graph. So you will see that the example is 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building, है ना. इसलिए उनसे favorite color पूछे गए. The results are shown in the following table. Represent the given data on a bar graph. Okay, so I am taking this example only
and this is the favorite color and the number of students. So to draw the bar graph, what I will do, first I have to make the two axes of the graph. मैं आपको शीट पर भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और बार ग्राफ पर भी, ठीक है. सो पहले बार ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं हम, लाइक दिस इज द योर ग्राफ पेपर. ओके, सो आई विल ड्रॉ द टू एक्सेस. This one, this is vertical axis that I have drawn and this is your horizontal axis. 6th standard में आपने बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा है. There was an question in your exam also. This is the origin or O you can say. So there are two axes. This is your horizontal axis and this is your vertical axis, and the horizontal axis is named as x-axis and this your vertical axis is named as y-axis. Okay, सो नाउ बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने दो एक्सिस ड्रॉ किए. नाउ यू विल टेक द स्केल. स्केल मीन्स आप एक यूनिट, दिस इज योर 1 यूनिट, ठीक है, दिस इज योर 1 यूनिट. ये थोड़ा रफली ग्राफ है इसलिए इसमें यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको समझना. दिस इज योर 1 यूनिट. तो अगर आपने 1 यूनिट ये कंसीडर किया विच इज़ योर 1 बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो थिन लाइंस होती हैं, दीज आर थिन 10 थिन लाइंस. मतलब अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 तो आपका मिडिल वाला 5 मार्क करेंगे, और अगर आप 0 से कंसीडर कर रहे हैं तो, और ये आपका यहाँ पर 10 आएगा. अगर आप ये लाइन को 0 ले रहे हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन, देन 6 7 8 9 10 लाइन, 10. Likewise here it comes 20, here it comes 30, here it comes 40 50 60 70 80 and 90. ये आपको ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट दे डू नॉट टेक केयर दैट दिस इज द यूनिफॉर्म विड्थ. मतलब ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं सारे नंबर्स, ठीक है. एंड दिस इज योर बेसिकली स्केल. स्केल मीन्स दैट व्हाट डू यू टेकिंग एज 1 यूनिट. सो यू हैव टेकन 1 यूनिट, 1 यूनिट. दिस इज 1 बॉक्स इज योर 1 यूनिट, है ना. एंड यू हैव टेकन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू your 10 what 10 स्टूडेंट्स, ठीक है. और ये लेने के बाद आप इस ग्राफ इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट भी करेंगे दैट दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि आपका ग्राफ बहुत ही एक्सप्लेनेटरी एंड एकदम करेक्ट हो और आपके मार्क्स कट ना हो. I can tell you students that this can cost you half marks, deducting half marks if you will not write these things, that what is the scale you have taken and what this axis represent. This is important. This is the feature of a complete graph drawn. Okay, and these here are your colors. एक्स एक्सिस पर आपने कलर्स रिप्रेजेंट किए हैं. एंड द स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स. आपने एक्सिस को मार्क कर दिया, एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, इक्वी डिस्टेंट यहाँ पर नंबर ले लिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके कलर्स हो गए. नाउ यू कैन सी दैट द रेड कलर इज लाइक्ड बाय 43 स्टूडेंट. सो व्हाट यू विल सी, दिस इज 40 एंड दिस इज योर 1 लाइन इज 41 42 43, हेयर 43. आप इसको डॉट मार्क करेंगे, उसके बाद आप इसको लाइन से you will draw and this will represent your 43. So this is the way of drawing a bar graph. Scale is necessary, pencil is necessary. I have used a pen here so that it is clearly visible to you. Okay, you will draw the graph with the help of pencils only. So this is your red color. So you can write here. आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं red और आप बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं रेड. ओके, लाइकवाइज यू विल ड्रॉ द ग्रीन. ग्रीन इज लाइक्ड बाय 19 स्टूडेंट्स. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज 20, तो इससे 1 लेस आपकी एक लाइन जो होगी दैट विल बी योर 19. ओके, दिस यू हैव ड्रॉन 19. लाइकवाइज ब्लू इज liked by 55 students. So here is you go to 50 and now the half of this box is your 55. So you will get this as 55. So likewise you can draw the for other color also. This is your green liked by 19 students. This is your blue
liked by 55 students. You can see that 50 और 60 के middle में lie कर रहे हैं यहाँ पर 55 है ना. And this is your color yellow, liked by 49 students. You can see that this 50 से एक line less आपका क्या होगा ये 49. Okay, so it means that when you take one box as 10 units, you should consider that these 10 lines are equally divided. Means one box is 10 units, so one line is 1, second line is 2, 3, 4, 5, 6. Likewise, these are forming the lines, so you should take care of that. Equal division must be taken. So here this is your orange color, which is liked by 34 students, and you can see that this is 30, then the first line is 31, then 32, 33, 34, and here is 34. The next line, this is the middle, this is 35, 36, 37, 38, 39, 40. So likewise you will consider this. So this is a complete graph, drawing a graph on the graph paper. The graph can be drawn on the sheet also, on the plain sheet also. कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास ग्राफ की अनअवेलेबिलिटी है, ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो आपको ग्राफ प्लेन पेपर पर भी ड्रॉ करना आना चाहिए. यू मस्ट नो दैट. और उसके लिए आप क्या करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल. अगेन ड्रॉइंग द एक्सिस, यू विल ड्रॉ दिस vertical axis, okay, and this is your horizontal axis. Okay, you have drawn the axis. This is your origin. Now because यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है आपके पास, तो आप कैसे देखेंगे कि इक्विडिस्टेंट? आप देखेंगे with the help of scale, with the help of centimeter. Okay, so here you can see that this is 10, but if I take it at 0, this will be your 1 centimeter, this will be your 2 centimeter, this will be your 3 centimeter, this will be your 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस तरीके से आप equidistant mark करेंगे. I have seen the students that they do not mark it as equidistant. ये equidistant आपने mark किया, तब जाके ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. फिर से ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने इधर मार्क कर लिए फॉर द सेम ग्राफ आई एम ड्राइंग. एंड यहाँ पर भी आप, क्योंकि यहाँ पे आप बार्स ड्रॉ करने वाले हैं विच शुड बी इक्विडिस्टेंट एज वेल. सो 1, 2, ठीक है. ये देखो, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको इक्विडिस्टेंट मिलते रहेंगे. एंड यू कैन टेक 1 यूनिट एज 1 सेंटीमीटर, यू कैन टेक 1 यूनिट एज 2 सेंटीमीटर ऑन द स्केल. आप ले सकते हैं, ठीक है. सो this is your this, and your scale is 1 unit is equals to 10 students. Okay, and you will write it as y-axis here, and you will write as x-axis here, and these are the colors here. And then again, like I'm drawing just for 2 colors, like for the green color, for the red color, that is liked by 43 students. So 40 और 50 के बीच में यहाँ पर कहीं 45 होगा. तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप एग्जैक्ट नहीं मार्क कर सकते, बट यू कैन हैव एन अजम्पशन दैट अगर 45 यहाँ पर है तो आपका लाइक हेयर यू कैन सी ना, लाइक दिस इज़ 1 सेंटीमीटर है ना. ये 40 आपका, तो 41, 42, 43 आपका यहाँ पर हो जाएगा, दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ से आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मार्क करके 43 इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. एंड यू कैन राइट दैट इट इज 43, और यू कैन राइट इट एज योर रेड कलर. Likewise, you can draw for other observation for other colors also. So this is basically drawing on the page. Now the next is this is your bar graph, drawing the bar graph. You have understood it in earlier classes also. So now next is example. I am taking an example from your book only, which is try these given on page number 72, the question number 2, okay, which says, this is your try these, and this is the question number 2, which says sale of English and Hindi books in the years, English and Hindi books की sale in the year 1995, 1996, 1997 and 1998 are given below. So these are the sales given of the books, ठीक है.
तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश की गिवन होती, ठीक है, इंग्लिश की बुक गिवन होती और ईयर गिवन होते, तो आप क्या करते, एक्स एक्सिस पर ईयर लेते और वाई एक्सिस पर आप नंबर ऑफ बुक्स लेते इंग्लिश की और एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देते। लेकिन हेयर यू कैन सी दैट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दो सब्जेक्ट्स की बुक गिवन है, दो सब्जेक्ट्स की बुक गिवन है और ईयर गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बार ग्राफ यूज़ करेंगे। इट मीन्स आपके पास एक तरह से देखा जाए तो थ्री डाटा हैं। फर्स्ट इज़ ईयर, सेकेंड इज़ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड थर्ड इज़ नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। तो 3 डाटा मतलब 2 से ज़्यादा जब आपके पास डाटा हो गए तो आपने डबल बार ग्राफ का यूज़ किया। ओके, सो वी विल सी दिस with the help of example. Okay, class 7 also I want to tell you that when we have to take a scale for the graph, okay, for the bar graph or for the double bar graph, whatever we are drawing, when we have to take a scale, what do we see? We do see the observation carefully and we check that of which of the number the observations given are a multiple. ठीक है, मतलब कि किस नंबर के मल्टीपल ये ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं या कितना मैं इक्विडिस्टेंट लूँ कि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी हो और एक इजी ग्राफ मेरा बन पाए। जैसे कि अगर आपके पास ये 350, 400, 450, 620 ये बुक्स हैं, ये नंबर ऑफ बुक्स हैं ऑफ इंग्लिश, तो अगर आपने ये सोचा कि 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लेकर के अगर आप इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस लेकर आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो आप खुद ही देखिए कि 350 तक पहुंचने के लिए आपको कितने लाइंस चाहिए होंगे, 35 लाइंस। अगर आपने एक बॉक्स को 10 यूनिट लिया तो 35 लाइंस जब होंगे तब आप 350 पर पहुंचेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 35 लाइंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिट को थोड़ा बिग नंबर सोचते हैं। एक यूनिट को आपने 25 सोच लिया, मान लीजिए आप 25 भी सोच सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 525 है, ठीक है, तो 25 अगर आपने लिया तो 25 का मल्टीपल में 50 आ जाएगा। 50 जो आपका ये 350 है तो ये भी आ जाएगा, 400 है तो ये भी आ जाएगा। बट 25 फिर से वही चीज़ होगी कि 25 लेने पर भी आपको लार्जर नंबर ऑफ लाइंस आपकी आएंगी, 25 भी छोटा स्केल होगा, ठीक है। सो थोड़ा और बिग स्केल सोचें तो आप 50 सोच सकते हैं। 50 सोचने पर आपको देखिए क्या होगा, अगर आप 50 सोचेंगे और आपको 400 ड्रॉ करना है तो 8 लाइंस आएंगी, है ना, 5 8 सा 40, सो 8 लाइंस आएंगी। मीन्स मैंने कैसे चेक किया, मैंने 400 को डिवाइड किया 50 से, है ना, तो मैंने देखा कि 5 8 सा 40, 8 लाइंस आएंगी। तो 600 के लिए आप देख लीजिए 10 के करीब लाइंस हो जाएंगी। सो अगर मैं एक बॉक्स को 50 लेती हूँ तो 10 भी बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है। इट मीन्स अगर 10 लाइंस होंगी तो इट विल बी ओके, इट विल बी कन्वीनियंट, इट विल बी ईजी, ठीक है। सो वाइल टेकिंग वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 50 यूनिट, है ना, तब और उससे आपके सारे नंबर, और आपको ये भी देखना होता है कि जब आप वन बॉक्स 50 यूनिट ले रहे हैं तो टू बॉक्स आपका सेकंड बॉक्स 100 हो जाएगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 250 होगा। तो आपके जितने भी डाटा है वो सब कवर अप हो पा रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करना होता है। सो आई हैव टेकन फॉर नाउ, आई हैव टेकन वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। ओके, सो दिस इज दिस one box is equals to 100 unit and now we are drawing a double bar graph. So 100 यूनिट लेने पर मेरा छोटा सा ही ग्राफ में कंप्लीट हो गया। अगर मैं 50 लेती तो इतना मेरा पूरा वाई एक्सिस तक कवर अप हो जाता, ठीक है ना, मतलब मुझे 12 लाइंस की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर मैंने 7 लाइंस की ज़रूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस के अंदर कवर अप हो पा रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस एंड आई हैव टेकन द स्केल। सो आई हैव ड्रॉन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एक्स वाई नेम किया, ओरिजिन नेम किया, इधर डिविजन्स ड्रॉ की, उसके बाद मैं अपना स्केल लिखूंगी। सो माई स्केल इज़ 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स 1 बॉक्स भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। तो मैंने 100 बुक्स स्केल ले लिया है 1 यूनिट का, ठीक है। नाउ आई कैन सी दैट दिस इज गिवन इन द ईयर 1995, एक ही ईयर 1995 में इंग्लिश की बुक्स हैं 350 और हिंदी की है 500। सो व्हाट आई विल डू, 350, this is 300, this is 400, in the middle there is 350, so this is your 350,
Okay, 350. And now the other is your 500. The Hindi is 500. So the second graph is just, second bar is just attached to this, and here this is showing English, this is showing Hindi books, and the year is 1995. So this two units 1995. Likewise, these two units will show 1996, and these two bars will show 1997, and these two bars will show 1998. So I have drawn, this is a double bar graph. एक ही ईयर में मैंने दो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एंड हेयर दिस इज द नंबर ऑफ बुक्स, ओके, and this is years. So this is the complete double bar graph. Means you have to write the scale, you have to write the x-axis, y-axis, and what they are representing respectively, and this is the double bar graph. This is called as double bar graph, is shown for a year 1995. Likewise, in the 1996 there is 400 English books and 525 Hindi books. So 400 is this, so you will make 400 is this is your English books, and 525. So you can see that this is 500, this is 550 in the middle. So उसका भी middle अगर मैं लूँगी यहाँ पर कहीं, आपका 525 होगा. So here marking this, I will get 525 approx. Okay, and I can write here 525, this is 400, this is your 500, and this is your 350, and I can write that it is English and it is Hindi. Likewise, for the other 2 years you can draw. I think it must be clear now. And this is your this is called as your double bar graph. Now moving toward the exercise 3.3, which contains very simpler question, and you will try doing, and we will discuss the questions in the next class. This is all for today, class 7. Do watch the complete video carefully, share and subscribe the channel if you are really liking the content, and to just motivate me. This can be a motivation for me as well. So, and complete your work, enjoy learning from home, and stay happy and stay safe at home. Thank you, class.